Good morning, students. I am your educator Ashok. Today, I am going to continue with contraception part 2. गर्भ निरोधक बाधा विधियों पे आज अपन प्रकाश डालेंगे. Before this, contraception part 1 पे अपन पहले बात कर चुके हैं. In that one, we talked about the calendar method and withdrawal method, whose success rate is quite low. What happened in withdrawal method? For a quick revision, withdrawal method में the male partner withdraws the penis outside the female body just before the ejaculation. And what about the calendar method? Calendar method में हमने ये जाना था कि normal case the female cycle menstruation cycle is of 28 days. In sometimes it may be 29, 30 और 32 डेज. उसमें आपने निकालना भी सीखा था. मान लीजिए किसी महिला की मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन की आती है, तो उसमें से अपन क्या करेंगे, 14 माइनस कर देंगे. तो कितना हो जाएगा, कौन से दिन आएगी उसकी साइकिल, 14वें दिन आएगी. फिर आपने देखा था कि मान लो किसी की 29 दिन की है, तो 29 माइनस 14 इज 15. 30 दिन का है तो 16वें दिन आएगी. इसी तरीके से 31 दिन का है तो 31 माइनस 14 कम्स आउट टू बी 17. 32 का है तो 32 माइनस 14 कम्स आउट टू बी 16. तो इस तरीके से ध्यान में रखते हुए कैलेंडर मेथड में कोर्टस को अवॉइड किया जाता है 12वें दिन से लेकर 18-19 दिन तक. दिस इज द वे कैलेंडर की जैसे इसको काम में लेते हैं, इसलिए इसको कैलेंडर मेथड कहा जाता है. Today we are going to talk about barrier method. बाधा विधियों के बारे में बात करेंगे. Barrier method is a name suggest. नाम से पता लगता है कि अवरोध. अवरोध मतलब we have already seen in fertilization what happens कि फेलोपियम ट्यूब में फीमेल्स के फेलोपियम ट्यूब में स्पर्म और ओवम मीट करते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन. उसी प्रक्रिया को अपने को रोकना है. उस प्रक्रिया को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं देते, या कहें अंडाणु को शुक्राणु से मिलने नहीं देते. और जब मिलेंगे नहीं तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा. और इसलिए बर्थ कंट्रोल या बर्थ नहीं होने के लिए मेथड्स को अप्लाई करते हैं. इस मेथड में अपन बैरियर का उपयोग करते हैं, इसलिए दिस इज नोन एज बैरियर मेथड. बैरियर मेथड्स को मोटे तौर पे देखें तो दे आर लाइक दे कैन बी आइदर कॉन्डोम्स, डायफ्राम, स्पॉन्ज, स्पर्मिसाइड्स एंड सर्वाइकल कैप्स. In short, quickly we take one by one. First of all, the most common barrier contraceptive is condoms. अपन सुनते आए, ऐड भी आता है, निरोध एंड ऑल. These are condoms. These are made up of rubber or latex. They are very thin, and these are available in both male condoms and female condoms. Female condoms, the brand name is Femidom. It's known as Femidom. And what's the main thing is what we do here, we just do one thing. On erected penis, we cover with the help of this condom. So what happens, the sperm is being collected in the condom only. It does not come into the vagina of the female, and this is how it prevents the fertilization. Now, there are other benefits of this condom also, because it prevents from STI और STDs, sexually transmitted infection और diseases में काफ़ी फायदेमंद है, especially when you talk about AIDS. So this is very much prevalent in sex workers, prostitutes. They use condoms so that the STDs can be prevented. When we talk about the side effects, और इसके नुकसान की बात करें तो समटाइम्स इट इज टर्न आउट, कोई फट भी जाता है, तो दैट कैन बी अ केस. और देन दिस ऑल अबाउट द कॉन्डोम्स. देन वी टॉक अबाउट डायफ्राम. What is diaphragm? Diaphragm is a female barrier method. In this, what happens? Dome-shaped device is used along with spermicide. इसमें दोनों का प्रयोग करते हैं. What is spermicide? It kills. It's a chemical which kills the sperm. Side में kill. Sperm मतलब sperm. तो जो sperm को खत्म कर दे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिसाइड बोलते हैं. और इसको ज़्यादा अच्छे इफेक्ट के लिए we used this diaphragm with the help of spermicides. So what happens,
सर्विक्स के पास इसको लगाया जाता है तो जो स्पर्म है वो एंट्री नहीं कर पाता. Then we'll talk about a sponge. What a sponge? Sponge is a round device made of soft foam that contains spermicide. Here also एक soft foam का बनना होता है, उसके अंदर spermicides होते हैं that kill the sperms. Then they are also available in the markets by the name of spermicides. And what happens? Spermicides are generally chemicals. These are chemicals. For example, nonoxynol is 9 is widely used. What happens? We do require an applicator. Then this is can be in the form of cream or gel. It can be suppository. Suppository are solid pellets. It can be in the form of thin sheet insert with the fingers close to the cervix. Then we also have cervical caps. So what are cervical caps? Again, these are round shape which is being covered. We cover the cervix. So the sperm fails to enter inside the female body, and that's why this prevents birth of a baby or prevents fertilization. To be precise, it prevents fertilization. So barrier methods are very popular, and these are generally used when we don't want any child, or maybe also especially when we talk about condoms are being used to prevent from STDs and STIs also. In the next one, we'll talk about hormonal methods, oral pills, and permanent methods. So I'm sure you must like this video. If you like it, please do subscribe, like, and share. Thank you so much.